Welcome back everyone. In the series of learning C programming, we have already discussed some basic about C, like introduction to C language, structure and execution of C program with the steps, that is translation, linker and loader model in the previous videos, right? And before writing a program, we should aware about some more concepts which we will use when write a program, like constants, variables, data types, functions. Without these, you cannot write programs. So first of all, we will discuss these concepts and then write programs, right? So today I am going to talk about constants in C language with its rules and some examples. So upon the completion of this session, the learner will be able to understand constants in C language. Okay. So constants, see here our concept is constants. Constants are having fixed values. The value of constants are not going to be changed throughout the program, or you can say during the execution of the program, the values are to be fixed. The programmer, while write a program, will specify these values, means compiler know the value of constants during compile time. You will not give the values at runtime, right? One thing is what? Symbolic constant. First is your symbolic constant. So that we used to define a fixed value. Suppose value of pi. So you can write like has defined pi 3.14. This is what? That definition section we have already discussed in structure of C program. It is symbolic constant for fixed value throughout the program, right? So we have basically two types of constants in C. First, number one is your numeric constant and number two is your character constant. Okay, but somewhere it is also written as four types like integer constants or real constants, character constants and string constant. Okay, so let us discuss. See here, constants are divided into two types mainly. One is numeric and other is character constant. Again, numeric constant is divided into two, that is integer constant and real constant, or आमे ताको कहि परिबा floating constant. Same. Next, character constant is divided again into two types, that is single character constant and string constant. Okay. So let's discuss the first one, which is integer constant. Okay. First we discuss the integer constant, right? So these are having decimal values like 10, 5, 1, 0. These are valid. But if you write 0, 5, see, this is invalid. In integer also there are three types. We know integer amara tinta type achi. Gote achi decimal integer, next achi octal integer, और third one hochi amara hexadecimal integer. तीनटा टाइप रा amara integer number achi. Clear? ए तीनटा रा constant भी amara exist करूची. So decimal means we can use the numbers from 0 to 9. Decimal होची 0 to 9 जे हमें digits को use करि परिबा. और जहार base केते? Base होची यार 10. Clear? से बली octal ले हमर अछि 0 to 7 जाय digit जार base हमें नेबा 8 octal. That से बली hexadecimal ले 0 to 15 और जार base हमें नोचे 16 बोल, right? So if you write 0 5, it may be octal 0 5. It may be octal, it may be decimal, sorry hexadecimal. Okay, but by default integer constant means decimal constant, not octal or hexadecimal. By default आम कहबा जे constant decimal constant बा integer constant कहले कोन, so by default integer constant कहले हमर decimal number को बुझेबो बा decimal constant को बुझेबो. So format of decimal is a simple. Format टा हमर decimal लो बहुत ही simple. Decimal लो format कोन? Decimal लो आमे जदी format लेखियो चाहेबा सन decimal format रे हमर एभली लेख परियो simple 10 105 then 213 etc. ए सब simple. बट जेतले octal format को आसीबा octal format हेले हमकु capital 0 सहित गोटे small 0 लेखियो पड़ो. Next माने करो 5 7, so एटा गोटे octal number हबो 0 0 3, एटा गोटे octal हबो 0 then 0 5 2, ये भी octal number हबो तार format. That's सेही बडी hexadecimal जदी हमें format देखिबा, so hexadecimal format रे कोन हबो 0x आसी जिवो, x for hexadecimal, so 0x15 लेखि परिबा, 0x74 लेखि परिबा,
0x a f এটা भी लिखि परियो सो ए af कोठु आसला लेटर आमे जदी देखिबा डेसिमल हेक्साडेसिमल हमर अछि 0 टू नेकी 15 पर्यंत सो फर्स्ट तुमरा नॉर्मली आसी गला 0 टू 9 का नंबर आसीबो जेतरा 10 11 12 13 14 और 15 एई तक को आमे लेटर रे रिप्रेजेंट करिया कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल E एंड कैपिटल F आई थिंक नंबर सिस्टम समस्त ये क्लियर थिबो सो 10 to 15 जन में A to F लेटर रे रिप्रेजेंट करछि क्लियर also you can write any special characters between integer constants because they are always in sequence okay like 1 2 3 4 आमे कोनोसी इंटीजर कांस्टेंट भितरे कोनोसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज करि परिबनी सेटा सब बेले सीक्वेंस रे थिबो कंटिन्यू थिबो ए बळे थिबो आमे देखु कमा ऐड करिक लिखिले एटा इनवैलिड हबो बट एटा वैलिड राइट सो बाय डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव आ जेतेबेला आमे लिखु जे हमर इंटीजर कांस्टेंट को से डेसिमल हेतो ऑक्टल हेतो हेक्साडेसिमल हेतो किछि भी हेतो बाय डिफॉल्ट तार साइन ता सब बेले कोन रहबो पॉजिटिव साइन रहबो जदि हमको नेगेटिव साइन लिखि रहस त हमको प्रॉपर लिखियो पड़ो -15 कि -20 ए भली क्लियर सो सेकेंडली डिस्कस रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट ये सब थिला हमर इंटीजर कांस्टेंट जदि हम रियल कांस्टेंट को देखिबा और हम जोटा को फ्रैक्शनल फ्लोटिंग कांस्टेंट बोली कहू जे सो दीस आर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इफ यू राइट 12.56 see 12.56 so here is your integer part and here is your fractional part and this point is your decimal point right so this is real constant like minus 56.02 real constant plus 123.24 real constant but if you write 12.56.02 it is invalid because there are not two decimal points dita decimal point amaro gote fractional number भितरे रहइबनी you can also represent this real or floating constants in exponential form having mantissa then e and then exponential form रे भी हमें ताको लिखि परिबा exponential form so exponential form रे कोन हबो first हमर रहइबो mantissa part first exist करिवो then रहइबो e and then रहइबो हमर exponent part right बुझियला so see form of these numbers like हमें कोबल कोबल लिखि परिबा that is 0 valid जदि 0x लिखिबा valid बट जदि हम लिखिबा 25,000 एटा invalid हबो जदि हम लिखिबा 012 valid जदि हम लिखिबा 12 ताथरे स्पेस देके मु लिखिबी 34 देन एटा हबो invalid जदि मु लिखिबी #123 then एटा भी हमरो invalid हबो okay so these are numeric constants by default these are positive sign clear न्यूमेरिक कांस्टेंट्स भितर हम एटी देखिले गोटे होची हमरो इंटीजर कांस्टेंट्स आ गोटे होची रियल कांस्टेंट्स और हम ताको कहि परिबा फ्लोटिंग कांस्टेंट ओके सो नेक्स्ट डिस्कस कैरेक्टर कांस्टेंट व्हाट दीज आर आल्सो टू टाइप्स कैरेक्टर कांस्टेंट भी हमर दी टाइप रो ऑलरेडी हम जेमति कैरेक्टर देखिले फर्स्ट होची हमरो सिंगल कैरेक्टर एंड सेकंड होची हमरो स्ट्रिंग कांस्टेंट सो व्हाट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इफ आई राइट a सिंपल आई राइट a सो यू विल राइट लाइक a को हमें सिंगल कोट भितर जदि लिखिबा देन ताको हमें कहबा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ओके सिंगल कोटेशन भितर रहला सो सिंगल कैरेक्टर मींस व्हाट इट इज हैविंग वन कैरेक्टर एनक्लोज्ड विदिन सिंगल कोटेशन मार्क राइट लाइक हमें जदी लिखिबा 5 सिंगल कोटेशन भितर ये भी गोटे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हबो कॉमा जदी गोटे स्पेशल कैरेक्टर को हमें सिंगल कोटेशन भितर रखले ये भी हमर गोटे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हैला जदी हम @ गोटे स्पेशल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन भितर रखुचे से भी हमर कोन हबो गोटे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट रो एग्जांपल हेई परिबो like any capital letter number small letter special characters etc किछि भी हमें जदी सिंगल कोटेशन भितर गोटे कैरेक्टर को रखिबा देन ताको हमें कहि परिबा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट सो दीज आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ASCII कोड इन द कंप्यूटर आ एगुडा को हमर कंप्यूटर रे को फॉर्म में स्टोर हो ASCII कोड फॉर्म में ASCII रो ऑलरेडी एग्जांपल सॉरी फुल फॉर्म हमें जानि छे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लाइक जदी हमें a रो वैल्यू देखिबा ASCII कोड ताले एटा होची 97 जदी हमें कैपिटल a को लिखुचे ताले कैपिटल a रो वैल्यू होबो 65 क्लियर तो ए बल भाबे सब सिंबल्स रो अलग अलग ASCII कोड अछि ओके एंड सी हम जदी लिखियो 5 एटा कोटेशन 5 सिंगल कोटेशन 5 एटा इक्वल नुह एटा होची ओनली हमरो इंटीजर कांस्टेंट बट एटा होची सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट राइट एटा न्यूमेरिक कांस्टेंट एटा होची सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एंड मीनिंग ओके सो दैट वी नीड टू टेक केयर राइट सो ASCII वैल्यूज आई एम राइटिंग बिलो यू कैन सी जदी हमें कैपिटल A to Z जाय ASCII वैल्यू नबा देन सेटा आसी जिवो 65 to 90 भितरे जदि स्मॉल a to z जाय नबा देन तार वैल्यू ASCII कोड आसीबो 97 to 122 जदि डिजिट रो 0 to 9 जाय हमें ASCII कोड वैल्यू करियो देन सेटा आसीबो 48 to 57
से भली स्पेशल कैरेक्टर्स जेते सारा हमर रहला हैश रहला हमर @ रहला कॉमा रहला ए सब रो जदी हमें ASCII कोड देखिबा तारे ताटा आइदर 0 to 47 भितर लाइक करिवो नै तो 58 to 64 भितर लाइक करिवो नै तो 91 to 96 भितर लाइक करिवो बुझिला सो यू कैन गूगल इट आउट दैट व्हिच स्पेशल कैरेक्टर्स आर बिटवीन दिस राइट you can also perform arithmetic operations on character constants because every character constants have their integer value सब character constant रो integer value अछि तो आराम से हम सेतिर arithmetic operations सब को perform करि परिबा like addition subtraction anything okay next comes string constant so string means what you can say it sequence of character or collection of characters enclosed within double quotation mark like I am writing here suppose I am writing here Rahul and enclosed with double quotation okay so this is your string constant right and these characters may be letters numbers or some special characters like space anything if I write like AB then dollar symbol and enclosed with double quotation this is also string constant but if I write A within double quotation although this is a single character but it is not single character constant because it enclosed within double quotation so it is also a string constant okay it is also a string constant जदि वो एटा हमरो गोटे कैरेक्टर अछि बट एनक्लोज्ड हेछि डबल कोटेशन भितरे आउ आमे कहिजे स्ट्रिंग कांस्टेंट सबरे डबल कोटेशन भितरे एनक्लोज्ड हेतै सो एटा गोटे कैरेक्टर थिले भी आमे ताकू कहा अंडर रे नबा डबल सॉरी स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट भितरे नबा ओके से भली आमे जेमति कहिले जदि आमे ए सिंगल कैरेक्टर दोचे सेटा डबल कैरेक्टर एटा को इक्वल हबो नै माने एटा हो जे हमरो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एटा हो जे हमरो स्ट्रिंग कांस्टेंट सो बोथ आर डिफरेंट राइट and whenever Rahul this is a string constant see here this is string constant whenever Rahul is in the program when compiler read this then compiler will store the first character compiler will store the first character and append a null character that is जदि हमें Rahul को लिखुचे then Rahul रे double quotation देजे compiler कोन करिवो first character को तो store करिवो then ता सहित कोन करिवो end रे गोटे null character जोटा होची /o जा को हम null character constant बोली पढिबा आगु को पढिबा एस्केप सीक्वेंसेस रे न्यू लाइन पई कोन null character constant पई कोन सो ताकू हमें लास्ट रे ऐड करबा व्हाई सो just to mark this is the end of the string आमे जानिबा जे जेतेबेले जोठी एनकाउंटर होबो null character जानिबा जे एठी string ता end हेछि ता माने l परे हमर आउ किछि string रे नाही so length of the string is what Rahul रे 1 2 3 4 5 then null character so length जदि हमें पचरेबा तारो length ता केते आसी जिबा हमर 6 because compiler added the null character fine so now discuss how to declare constants in your program this is your constants four types of constant हमें जानले first जानले numeric constant जा अंडर आसला integer and real then आसला हमर character constant जा अंडर आसला single character जोटा हमें single quotation भितर रिप्रेजेंट करले next आसला string constant जा को हमें double quotation भितर रिप्रेजेंट करले next देखिबा हमें ए जो constants को declare को टाइप रो करबा ओके so see we use const keyword constant को declare करे पे हमको const keyword रो यूज करिया पड़िबा const ताले जे कि हमें constant को declare कर परिया suppose I am writing a program see void main मु किछि भी header file include करनी simply लिखुची then normally मु गोटे const keyword through रे गोटे constant को declare करली int a equals to 10 then किछिरा statement तळे लिखली and end करली okay that means the value of a is constant throughout the program and you cannot change this value right if you print the value of a then always it would be 10 because of this const keyword जदि हमें a ର value को print करेबा then जत्ते बेले भी प्रोग्राम में a ର value को print करबा always सेटा 10 ही आसीबा तार आउटपुट काहे ना एटा को हमें constant बोली डिक्लेयर कर देछि right always it would be 10 and suppose after that I will write a equals to 50 suppose या परे कोन से गोटे लाइन में मु लिखि छि a equals to 50 ताले हमु कोन आसीबो एटा गोटे एरर आसीबो सेटा को एक्सेप्ट करिवो नाही कंपाइलर काहे ना ऑलरेडी हमें a ର value को ऊपर कांस्टेंट बोली डिक्लेयर करछे ताले थ्रू आउट द प्रोग्राम ए रो वैल्यू को हमें चेंज करि परिबा नै बट हमें पछरे ए रो वैल्यू को अगेन चेंज करिछे बुझियो नै सो हम कोन देखबो एरर आ एटा मु कमेंट लाइन सिंगल कमेंट लाइन रे एरर टा को लिखले सो दैट ताकू कंपाइलर एग्जीक्यूट करे नै क्लियर सो यू विल ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ a then this line will give error okay but if you write simply a equals to 10 जदि हमें const न लिखि के एठी लिखि तांदे simply a equals to 10 only एति के पार्ट लिखि तांदे const टा लिखि न तांदे then after that you can write a equals to 50 that's right then you can change the value of a जदि हमें only int a equals to 10 लिखि तांदे then तापर जदि a रो वैल्यू को 50 करतांदे हमें आराम से चेंज करि परतांदे से किछि भी एरर देइ न थांदा it will not give any error right
So you have to declare constant using const keyword. जेतेबेले हमें constant को हम प्रोग्राम रे declare करिबा हमको सबले const keyword को यूज करिया पड़ियो. Another thing is you can use hash define, that is macro definition. ऑलरेडी हमें डेफिनेशन सेक्शन में पढ़िथिले hash define को भी हमें constant रो यूज पई जोटा कि हमें symbolic constant फर्स्ट स्लाइड रे मु कहै छी symbolic constant को हम यदि डिक्लेयर करिबा ता पे हमें hash define को यूज करिबा macro definition को, that we already discussed in the beginning of this video to represent symbolic constant. And you write is above the main function. आमे जेतेबेले भी macro definitions कोन कोनसी symbolic constant को यूज करिबा ताको सबले हमें main function ना ऊपर डिफाइन करिबा जोटा हमर definition section. Okay, so suppose I will write hash define a10. This is also fine, right? Generally here we write capital letters. सब बेले हमें constant symbolic constant रे जो variable को रखिबा ताको हमें capital letter रे represent करथौ. Like आमे जेतरे पाई लिखुचे बा max लिखुचे सब किसी को हमर कोथरे capital letter रे represent करियो. Why so? Because you can distinguish between normal variables and the symbolic constants within the program. जदि हमें एठी small a लिखि दबा ताले throughout the program जदि हमें कोठी a को यूज करबा ताले तो से मैच कर जिवो. सेति में सबले symbolic constant को small न लिखि के हमें capital रखुछन. तो कोन हमरो फायदा कोन हबो, एडवांटेज कोन, जदि हमें प्रोग्राम रे केतबेले a दरकार पड़िबो स्मॉल a को हमें गोटे वेरिएबल भाबरे यूज करि परिबा. Okay, so when you write these hash define statements, then there are some rules to use this. जेतेबेले हमें hash define sentence को लिखुजे macro definition किछि भी माने कर हमें लिखिले hash define pi 3.14 ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड रे हमें कहिजे. सो जदि एई भलिया गोटे macro definition को हमें यूज करछे ताले एटा यूज करिबार हम तो जानले को definition section रे लिखिबा जोटा हमरो मेन सेक्शन पूर्वरु मेन फंक्शन पूर्वरु हमें ताको डिफाइन करबा और रिप्रेजेंट करबा. बट सेटा लिखिबारे किछरा रूल्स अछि, किछरा रूल्स को हमको फॉलो करियो पड़िबो. क्लियर? So first rule कौन ना, there should be not any space between hash and define. ये जो hash और define हमें लिखुचे ता भितरे कोनोसी स्पेस रहबो, no space between hash and define. ए दिटा भितरे हमर कोनोसी स्पेस रहबो. त माने हम जेतेबेले भी लिखिबा ताको एबळे लिखिबा hash आउ ता साइड रे ही define को मेंशन करबा. एमान को भितरे कोनोसी स्पेस रहबो नाही. फर्स्ट रूल. So second rule is कौन? Second rule is the space between hash define then constant and then value. ताले स्पेस रहिबो कोठी आमे जो hash define लिखुचे hash define भीतर तो स्पेस रहलानी ता पर जोटा लिखिबा जो symbolic constant को हमें डिफाइन करछे से माने को भीतर स्पेस रहबो. ताले hash define पर जो पाए लिखिले एठी हमरो स्पेस रहला, देन पाए पर जो वैल्यू रखिबा सेठी भी हमरो स्पेस रहबो. सो ए भली hash define आउ तुमरो जो symbolic constant वेरिएबल अछि ता भीतर स्पेस रहला आउ symbolic constant वेरिएबल अतर वैल्यू भीतर भी हमको स्पेस दबा पड़ियो. बुझियला? नेक्स्ट आसिला रूल नंबर 3. सो रूल नंबर 3 कोन? Another rule is you cannot use here equal to. Like जदि हमें लिखिबा ए भली hash define then pi equal to 3.14 ए भली हमें लिखि परिबा नाही, एटा हमरो एरर आसीबो. बुझियला? इक्वल टू सिंबल केबे हेले भी हमें मैक्रो डेफिनेशन बा डेफिनेशन सेक्शन में सिंबॉलिक कांस्टेंट रो वैल्यू को रिप्रेजेंट करबा पय यूज करि परिबा नाही. एटा हमरो कोन हेजिबो? इनवैलिड हेजिबो, वैलिड इन होय. सो ये हमरो एरर शो करेबो. राइट? नेक्स्ट नंबर 4 रूल रे हमर कोन आछि? You cannot use semicolon after this hash define statement. आमे जो hash define statement लिखिले ए भली हमें जदि रिप्रेजेंट करबा hash define pi 3.14. सो एठी लास्ट सेमिकोलन हमें देई परिबने. सेमिकोलन देले एटा एरर आसीबो. सेमिकोलन मैक्रो डेफिनेशन सेक्शन रे रुहे नै. डेफिनेशन सेक्शन में हमें जो सिंबॉलिक कांस्टेंट को सब रिप्रेजेंट करबा सेथरे हमर सेमिकोलन रहिबो नै. अल्दो हमें जानचे सी रो जेते सारा स्टेटमेंट्स हमें लिखिबा तार बॉडी भितरे सबुतरे हमर सेमिकोलन बाउंड. सेमिकोलन न देले एरर आसीबो. जितरा हमें प्रोग्राम ऊपर को जिबा छोट छोट प्रोग्राम करे सेतरा आउट क्लियर हे जे. बट हमें एतिकी क्लियर हो जे डेफिनेशन सेक्शन ने केबे हेले जो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट को हमें डिफाइन करजे सो hash define जो स्टेटमेंट थिबो ता पर केबे हेले सेमिकोलन लागेनी. जेम हमरो hash include हेडर फाइल हमें इंक्लूड करजे सेतिरे ओनली एंगल ब्रैकेट रोज लास्ट सेमिकोलन रहउनी. सेही बळी भाबरे hash define स्टेटमेंट पर भी सेमिकोलन रुहे नै. क्लियर? सो ए चारटा रूल. फर्स्ट रूल हेला हमरो hash define भितरे स्पेस रहइबनी. सेकंड रूल hash define पर जो वेरिएबल हेची आ वेरिएबल पर जो वैल्यू अछि से मान दि जण भितरे स्पेस रहइबो. थर्ड रूल कोन कहला? इक्वल टू सिंबल हमें लिखि परिबानी. तमे जो कांस्टेंट हमें यूज करछे कांस्टेंट वैल्यू दोछि से मान भितरे इक्वल टू रखि परिबनी, से मान भितरे स्पेस रहइबो. एंड नंबर 4 होछि लास्ट सेमीकोलन यूज करि परिबा नाही. क्लियर? सो these rules you have to take care, and this is the type of constants and how you declare constants in your C program. Okay, so you can also check and run the program in your IDE, and if any doubt then tell me in the comment box. Right? So I think that's it about the constants. In the next video I am going to discuss the variables in C. Okay, thank you.